नमस्कार। आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम इन केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यानी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। सिंगल ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन 8 marks, identification of one acidic and one basic radical in an inorganic mixture 8 marks, identifying one functional group in an organic compounds 4 marks, project task 4 mark, practical record 4 marks, verbal यानी viva 2 marks, total 30 marks। अब प्रस्तुत है वाइवा बेस्ड ऑन टाइट्रेशन। देखिए, आप टाइट्रेशन जब करते हैं तो एग्जामिनर आपसे टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, बच्चे पूरी तरह से क्लास में आ नहीं पा रहे हैं, तो ये एक तरह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी बच्चे भी इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को देखें और अपनी तैयारी प्रैक्टिकल एग्जाम की करें। इस उद्देश्य से ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज टाइट्रेशन। जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। The process of determining the concentration of an unknown solution with the help of known solution is called titration। अब यहाँ पर देखिए, फिर दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं दिए, लेकिन व्हाट इज अननोन सॉल्यूशन, व्हाट इज नोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन यानी जिसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, नोन सॉल्यूशन ऑलरेडी कंसंट्रेशन नोन। फिर व्हाट इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन। व्हेन टाइट्रेशन टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस, this process is called acid base titration। Third, give example of acid base titration. Titration between hydrochloric acid and sodium hydroxide, the titration between oxalic acid and sodium hydroxide। हालांकि एसिड बेस टाइट्रेशन क्लास 11th में है, क्लास 12th में रेडॉक्स टाइट्रेशन है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। द टाइट्रेशन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड and another substance is reduced, then this type of titration is called redox titration। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है। Give examples of redox titration। Titration between oxalic acid and potassium permanganate यानी KMnO4। Another example is titration between ferrous ammonium sulfate and KMnO4। Next, what is a standard solution? The solution whose concentration is known is called the standard solution। Next, what is a normal solution? The solution in which 1 gram equivalent mass of the substance is dissolved in 1 liter is called a normal solution। And what is molar solution? The solution in which 1 mole of the substance is dissolved in 1 liter is called a molar solution। तो normal solution, molar solution पता होना चाहिए, molarity, normality की definition भी पता होना चाहिए। What is meant by 1m solution? If 1 mole of the substance is dissolved in 1 liter of the solution, then the molarity of the solution will be 1 and it is denoted by 1m। तो 1m, what is 1m पूछ सकते हैं आपसे। What is meant by 0.1m or m by 10? If 0.1 mole of the substance is dissolved in 1 liter of the solution, then the molarity of that solution will be m by 10 or 0.1 molar। Next, what is meant by 1n solution? If 1 gram equivalent mass of the substance is dissolved in 1 liter of a solution, then the normality of that solution will be 1n।
तो यहाँ पे 1n। अब आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1n/10? If 1/10 of 1 gram equivalent mass of the substance is dissolved in 1 liter of a solution, then the normality of the solution will be n/10. Similarly, आपसे n/20, n/40 का पूछ सकते हैं। तो वहां पे n/20 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे आप उस टाइप से जो है मतलब 1/10 की जगह 1/20 ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास कर देंगे। What is the molecular mass of ferrous ammonium sulfate? So the molecular mass of ferrous ammonium sulfate is 392 gram. What is the molecular mass of KMnO4? तो 158। अब ये molecular mass के लिए आप atomic mass का sum कर देंगे तो molecular mass आ जाएगा। What is the equivalent mass of KMnO4 in acidic medium? In redox titration, KMnO4 liberates 5 electron in acidic medium. So the equivalent mass equal to molecular mass upon loses number of loses electron. So 158 divided by 5, that will be equal to 31.6. As the equivalent mass of the KMnO4 in acidic medium is 31.6. ये आपको बताना है। Next, what is an indicator? Indicator is a chemical substance which changes color at the end point of यहाँ पे phenolphthalein and methyl orange. These are used in acid-base titration. What is the end point? During the titration, the stage at which the reaction is completed and a light pink color is obtained, then we say the end point of the titration. Then this is known as end point of the titration. What is the function of KMnO4 in redox titration? KMnO4 acts as an oxidizing agent. So in redox titration, KMnO4 oxidized to ferrous ion into ferric ion and self-reduce. What is the function of ferrous ammonium sulfate in redox titration? Ferrous ammonium sulfate acts as a reducing agent. Next, what is Mohor salt? Give its formula. Ferrous ammonium sulfate is called Mohor salt. ये बहुत पूछा जाता है कि what is Mohor salt? And its formula is FeSO4 NH4 whole 2 SO4 6H2. Next, which substance perform the function of indicator in redox titration? In redox titration, KMnO4 act as an self indicator. तो redox titration में हम अलग से indicator यूज नहीं करते, KMnO4 ही indicator होता है. Why does KMnO4 itself act as an indicator? In the presence of dilute sulfuric acid, the reducing agent is oxidized to KMnO4. When it reacts with a reducing substance such as oxalic acid or ferrous ammonium sulfate. A small amount of KMnO4 does not decompose and it imparts a pink color to the solution. तो यहाँ पे लास्ट में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 है वो पिंक कलर देता है, ठीक है। Why is ferrous ammonium sulfate used as the primary standard in titration? Because ferrous ammonium sulfate, Mohor salt, is a stable salt. It does not oxidize in air, hence ferrous ammonium sulfate is used as the primary standard in titration. तो उसकी स्टेबिलिटी के कारण हम जो है इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। Why are few drops of dilute sulfuric acid added to ferrous ammonium sulfate
solution during titration. In titration, a few drops of dilute sulfuric acid are added to ferrous ammonium sulfate solution because a few drops of H2SO4 and sulfuric acid inhibit the hydrolysis of ferrous sulfate and prevent the solution from degrading. तो रोल क्या है ये समझ गए होंगे कि H2SO4 हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर रहा है. Next, what is the list count of burette? In my laboratory, we can measure 0.1 ml volume minimum. So its list count is 0.1 ml. 10 ml 27 degrees Celsius or 20 ml 27 degrees Celsius is written on the pipette. What does it mean? 10 ml 27 degrees Celsius means the volume of the solution taken by pipette is 10 ml at 27 degrees Celsius, and 20 ml 27 degrees Celsius means the volume of the solution taken by pipette at 27 degrees Celsius is 20 ml. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बता नहीं पाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए. What is the meaning of concordant readings in titration if readings have been taken 3-4 times and the last two readings are identical, then they are called concordant reading. इस observation table में आप देख रहे हैं, first reading is 10.5 ml, second 10 ml, third 10 ml. It means last two readings are identical, so these readings are known as concordant readings. थैंक्स. तो इस ढंग से आप प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करें और अपना जो एग्जाम की तैयारी है वो आप कर सकते हैं. थैंक यू.